Success does not just happen, it's planned for, and it is the outcome of careful and strategic planning. So, my dear friends, let me tell you that first of all, a warm welcome to all of you in the success story series for the NABARD Grade A Officer 2023 recruitment cycle. And today we have a true embodiment of the dedicated and strategic planning who has not just cleared the NABARD Grade A Officer exam, but has also set a benchmark for all the aspiring achievers. Let's welcome Miss Sonam Verma. Thank you, sir. So, first of all, heartiest congratulations to you, ma'am, for becoming the NABARD Grade A Officer. Thank you, sir. Thank you so much. So, you must be in the feeling of awe, like you have just cleared the NABARD Grade A Officer. So, what exactly is the feel that you are having right now? It feels great, sir. Yeah, I feel really good. So, guys, let me tell you that she is a working aspirant and she is presently working in the State Bank of India. And in her very first attempt, she has cleared the NABARD Grade A Officer exam in the Computer and Information Technology stream. She is a specialist officer. And today, in this session, through this session, we will be understanding more about her beautiful preparation journey of becoming the NABARD Grade A Officer exam. And we can also learn the different points that we can implement for becoming the next NABARD Grade A Officer. So let's start from on a very light note. Ma'am, when you just checked your roll number, like what exactly was the feel when you just saw your result? What exactly was that moment? Sir, I checked the roll number from the PDF I downloaded from WhatsApp. So there I just control F, tried to search my roll number, but I couldn't find that on the page. So I felt bad because I worked hard, although it was first attempt, but I really worked hard. So आई सैट फॉर 2 मिनट्स लाइक ब्रांच में ही थी मैं उस टाइम पे उसके बाद आई कुड सी लाइक व्हाट्सएप पर पॉपअप्स आ रहे हैं फॉर अदर कैंडिडेट्स की कंग्रेचुलेशंस एंड ऑल उसके बाद आई ट्राइड टू डाउनलोड द पीडीएफ फ्रॉम नाबार्ड्स ऑफिशियल साइट वहां से आई डाउनलोडेड उसके बाद आई डेंट जस्ट कंट्रोल लेफ्ट आई वाज knowing my roll number I learned that तो रोल नंबर बाय रोल नंबर आई चेक्ड कि ठीक है मतलब छोटा ही लिस्ट है आई कुड फाइंड इट एंड जब वहां पर रोल नंबर आई कुड फाइंड आई वाज अ बिट कंफ्यूज्ड कि ठीक है मे बी मुझे रोल नंबर याद नहीं है आई वेरीफाइड इट फ्रॉम द ईमेल कि नाबार्ड का मेरा रोल नंबर तो यही था ना उसके बाद आई वेंट टू माय कलीग एंड उससे चेक करवाया सर can you please check this roll number in this pdf so when he also checked and he could find there he also congratulated me कि मैडम हो गया है तो there I was like overwhelmed कि I didn't know how to react तुरंत मैंने घर पर कॉल करा एंड मम्मा को बताया कि मम्मा हो गया है इंटरव्यू देने गई थी जिसका नाबार्ड में हो गया है फाइनली सो या इट वाज अ गुड फीलिंग सो आपके पेरेंट्स ने किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया इस गुड न्यूज से? सो पेरेंट्स वर रियली हैप्पी पापा नहीं थे घर पर उस टाइम पे बट मम्मा हर्ड एंड मम्मी ने पापा को बताया उसके बाद आई गॉट अ कॉल बैक फ्रॉम पापा एंड वी मर्ज द कॉल सो दे वर रियली हैप्पी एंड दे वर लाइक कि चलो मेहनत का फल मिल गया एटलीस्ट बिकॉज दे हैव सीन कि रात रात भर पढ़ाई कर रही हूँ मैं या फिर घर पर भी बात नहीं कर पा रही हूँ प्रॉपरली ब्रांच से आकर फिर पढ़ने बैठ जाती थी so yeah they were really happy ki at least what I wanted, what I aspired for, I got it. And that's really a true achievement of yours, of your continuous hard work. So guys, let me tell you that as she was a working aspirant, तो काफी ज्यादा challenges face करते हैं as a working aspirant. Time management को किस तरीके से handle करना है, there are so many things. But before that, I have one question. As you are already working in the State Bank of India, तो how did NABARD happen basically? NABARD को आपने क्यों choose किया? Why exactly you started preparing for NABARD? So for NABARD, like I came to know about NABARD from SBI itself because we used to provide financing for warehouse and FPOs. So there I could find the role of NABARD. And from peer groups I came to know कि ठीक है NABARD में भी grade A officers का direct recruitment होता है from BTech और computers और any graduate. तो
उसमें आई कुड सी कि ठीक है, जनरलिस्ट का भी पोस्ट है एंड स्पेसिफिक स्ट्रीम का भी पोस्ट है, एंड आई न्यू कि माय एक्सपर्टीज इज इन आईटी, सो आई कुड ट्राई फॉर दैट। तो वहां से आई केम टू नो कि ठीक है, नाबार्ड में भी पॉसिबल है, लाइक इट इज अ ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन। देन आई स्टडीड कि नाबार्ड एक्चुअल में क्या करता है एंड क्या क्या फंक्शनैलिटीज हैं। देन या नोटिफिकेशन अराइव एंड आई अप्लाइड फॉर दैट। Okay. So, did you also appeared for some other regulatory bodies exams, or it was just the NABARD? No, sir. Like SBI for banking examination, SBI was my first examination which I appeared for last year. Then after that, I checked like what all government examinations are there. So there I came to know about RBI Grade B. For RBI Grade B also it was my first attempt, but there I could not clear the mains examination. So from there I learned few lessons, ki how to prepare for a regulatory body basically. And for NABARD, since I was applying for IT stream, prior to NABARD, there came a notification for NISCL AO. There also I could see कि IT stream से भी we could apply. So that was like for testing my knowledge कि ठीक है government examinations में कैसे होता है, because I like college में I gave campus placements, तो it could be different, somewhat different. तो वहां से आई कुड प्रिपेयर कि ठीक है प्रीलिम्स ऐसा हो सकता है, मेंस ऐसा हो सकता है, उसके बाद इंटरव्यू कैसा हो सकता है फॉर आईटी स्पेसिफिक स्ट्रीम। फ्रॉम देयर एंड फ्रॉम ग्रेड बी आई टुक सम लेसन्स एंड उसको अप्लाई करा नबार्ड ग्रेड ए में, बिकॉज Can you mention those lessons that you garnered from those attempts, like the RB grade B that you just mentioned? So for grade B, like mains में I learned a lesson because कि I need to work upon myself. I need to encourage myself to like type, especially type, because there it was very exhaustive examination and it was my first attempt. So I got a little like कि ठीक है बहुत हो गया है, I have typed enough, I have thought enough, now my brain has stopped working, तो अब नहीं करना है। एंड इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ माय लेजीनेस कि मैं आगे अटेम्प्ट नहीं कर रही थी क्वेश्चंस। इवन इफ आई अटेम्प्टेड आई वाज लाइक हाफ हार्टेडली आई अटेम्प्टेड। तो आई न्यू कि मुझे मेंस में बैठना एंड खुद को एनकरेज रखना, दैट इज इम्पोर्टेंट। बिकॉज आप अगर पढ़कर आए हो, यू हैव द नॉलेज, यू कैन टाइप, बट टू गेट दैट encouragement you need to work from within, खुद को मोटिवेट रखना इज इम्पोर्टेंट। So, तो कैसे आपने खुद को encourage किया, खुद को motivate किया and overcame this obstacle? sir, like from practice itself, सुबह, because I am not a morning person, मुझे सुबह उठने की आदत नहीं है, तो हमेशा एग्जामिनेशंस, मेंस एग्जामिनेशन सुबह होते हैं एंड दैट वाज वन ऑफ द टफेस्ट पार्ट फॉर मी कि सुबह उठकर जाना है एंड इतना सारा टाइप करना है आपको। एंड सिर्फ टाइप नहीं करना है लाइक रिकलेक्ट योर थॉट्स एंड जो भी नॉलेज है वो सब कलेक्ट करके कैसे स्ट्रक्चर करना है, कैसे आंसर करना है। तो उसमें आई यूज टू प्रिपेयर कि ठीक है भले ही मैं सुबह उठूं एक बार, उसके बाद फिर सो जाऊं, या फिर इवनिंग में 1 आवर का पावर नैप लेके फिर कुछ काम करूं। तो दैट आई यूज टू प्लान कि सुबह कुछ दिन पहले से आई स्टार्टेड वेकिंग अप अर्ली। सुबह 6 बजे उठूंगी, उसके बाद थोड़ा सा कुछ भी, भले इवन इवन इफ आई आंसर वन क्वेश्चन, वन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, इट वाज इनफ फॉर मी। बिकॉज स्टार्टिंग में शॉर्ट टर्म गोल्स इज बेटर कि आप थोड़ा थोड़ा करके खुद को डिस्करेज मत होने दो। तो देयर आई यूज टू प्रैक्टिस, बिकॉज सुबह ब्रांच भी जाना होता था मुझे, फिर ब्रांच में पूरा दिन कस्टमर डीलिंग करने के बाद उसके बाद फिर खुद को मोटिवेट करना पड़ता था इवनिंग में पढ़ने के लिए। तो सुबह का 1 आवर आई यूज टू dedicated towards like encouraging myself and sitting in front of my laptop कि थोड़ा सा काम करना है। उसके बाद आफ्टर 1 आवर आई यूज टू फ्रेशन अप एंड ब्रांच जाना है, ब्रांच से लाइक वापस आकर कभी 7 हो रहा है, कभी 8 हो रहा है, तो उसके बाद आई यूज टू मेक श्योर कि कभी भी ब्रांच से वापस आए, जस्ट हाफ आवर ब्रेक के बाद तुरंत रिकलेक्ट योर सेल्फ एंड सेट टू स्टडी। एंड पहले से टारगेट सेट करना है कि ये करना है आपको,
इन लिमिटेड डेज, एंड इन डेज में आपको कोई भी टॉपिक, जब जिस टॉपिक का मन करे बस वो करना है। तो स्पेसिफिक टॉपिक स्पेसिफिक नहीं रहा है मेरा, बट सिलेबस स्पेसिफिक रहा है। ये पूरा सिलेबस है, इसमें से आपको जो करना है वो करते रहो। So that's where your planning plays an important role. Guys, let me tell you that she has really focused more on her planning, and that strategic planning has given her those results. And even from the starting, the preparation until the last stage of the exam, that planning part has really made a major role. And we will also see that, witness this with her journey of preparation. सो कैसे आपने मतलब प्लान किया, लाइक एज यू मेंशन कि शॉर्ट टर्म गोल्स को आपने रखा सो दैट कि एक मोमेंटम आपका बना रहे, यू विल अचीव दो शॉर्ट टर्म गोल्स एंड कलेक्टिवली you are moving continuously towards that long term goal of yours becoming the NABARD grade A officer. तो वो किस तरीके से फ्रॉम द इवन स्टार्टिंग टू द लास्ट? सो लाइक जैसे ही NICL का एग्जाम ओवर हुआ उसके बाद नबार्ड का आई स्टार्टेड स्टार्टेड प्रिपेयरिंग। उसमें भी प्रीलिम्स में आई वाज लाइक कि ठीक है, जो जो सब्जेक्ट्स हैं, whichever subject was easier for me, like where I expertised in, वो सब्जेक्ट्स तुरंत सिर्फ लाइक इट वाज लाइक ठीक है, डेली का अगर मैं हाफ आवर भी दे रही हूँ दैट इज सफिशिएंट। तो 1 वीक में मुझे प्रीलिम्स के वो सब्जेक्ट्स निकालने हैं, वो सेक्शंस निकालने हैं व्हिच वर लाइक क्वालिफाइंग इन नेचर। तो 1 वीक वाज सफिशिएंट फॉर दैट बिकॉज़ तब तक डेट नहीं आई थी फॉर Hmm. प्रीलिम्स। Let me give an overview of this phase one exam to the students. Like guys, we are having total 8 sections in the phase one, which are divided into two different parts, like qualifying section and the merit section. Qualifying section आपको सिर्फ sectional cutoffs clear करना रहता है, and in the merit based sections are basically used for shortlisting for the mains exam. तो उसमें आपको कट ऑफ्स, ओवरऑल कट ऑफ भी निकालना है, एंड दैट इज बेसिकली बीइंग यूज्ड. So when we talk about the qualifying section, there are 5 sections. Like we have quant, reasoning, English, decision making and computer knowledge. So आपके लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग कौन सा सेक्शन था among these qualifying sections, and how did you manage them? So सबसे difficult was decision making for me because whatever you think is the right answer, like starting में I tested कि ठीक है मुझे कितना आता है, because general questions होते हैं, I used to think कि ठीक है ये तो आ ही जाएगा। तो YouTube पर I checked कि ठीक है ये previous year के questions है, I used to check कि ठीक है ये आंसर तो ये होगा, बट व्हेन वीडियो यूज्ड टू कंटिन्यू, नहीं ये आंसर नहीं है, दैट मीन्स यू नीड टू स्टडी फॉर दैट इटसेल्फ कि 10 क्वेश्चन है उसके बाद भी यू नीड टू स्टडी टू क्वालिफाई, बिकॉज वो भी काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो उस केसेस में यूट्यूब वीडियोस हैज हेल्प मी अलॉट। वहां पर आई यूज टू वॉच मैराथन्स, टॉपिक स्पेसिफिक मैराथन, की अगर डिसीजन मेकिंग है, डिसीजन मेकिंग में मेनली किस सेक्शन से क्वेश्चंस आते थे। सिंस ग्रेड बी में मैंने प्रिपेयर किया था मेंस के लिए, तो कुछ टॉपिक्स रिलेटेबल लगे मुझे इस केस में। तो वहां से जब भी वीडियोस मैं देखती थी, एक बार समझ नहीं आया या फिर एक बार आई कुडंट रिमेम्बर, फिर से रिपीट में लूप में 2x की स्पीड से भले ही वो वीडियोस चलते रहते थे मेरे रूम में। बट लाइक जो दूसरे सब्जेक्ट्स थे, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, दो सब्जेक्ट्स वर लाइक इजी गोइंग फॉर मी बिकॉज बैंकिंग एंड सिंस आई एम इंजीनियर, तो इंजीनियर्स के लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है वो, बिकॉज स्टार्टिंग से ही हम मैथ्स एंड रीजनिंग करते रहते हैं। तो दोज वर ओके फॉर मी। ओके, तो उनको इजीली आपने कैटर किया. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द फेज टू पार्ट, सॉरी द मेरिट बेस्ड सेक्शंस, तो आपने मेरिट बेस्ड सेक्शंस को किस तरीके से टैकल किया है? लाइक वी आर हैविंग 3 sections: जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज, एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. So for merit based, it was a bit difficult for me because my general awareness was not at all good. And ARD में I was a bit worried because I was not from agri background, तो I thought कि मतलब थोड़ा सा difficult होगा ARD. But when I started studying it, I started enjoying it कि ठीक है ये तो पूरा का पूरा geography है what we used to study in schools. तो for that also I watched many marathons for ESI also, like जैसे ग्रेड बी के लिए किया था, वीडियोस देखना या फिर स्कीम्स रीड करना, तो यहाँ पे स्पेसिफिक जो रूरल या फिर एग्री डेवलपमेंट के लिए स्कीम्स थी, वो सारे के सारे स्कीम्स का पहले जो जो, जो रिसेंट ईयर्स में लॉन्च हुई हैं या फिर कुछ चेंजेस हुए, वो सारे
यूट्यूब पर सिर्फ टॉपिक वाइज, लाइक एफ पी एम कुसुम या फिर जनधन योजना या कुछ भी है, सिर्फ वो टॉपिक सर्च करके जो भी वीडियोस रेलेवेंट लग रहा है वो वीडियोस को अलग सेपरेट एक सेक्शन में रख के वो सारे के सारे वीडियोस मुझे खत्म करने हैं 2 दिन के अंदर या फिर ऐसे 3 दिन के अंदर। तो आई यूज टू प्लान कि ठीक है ये सब करना है इस सेक्शन में। फॉर जनरल अवेयरनेस इट वाज लाइक कि अफेयर्स क्लाउड के वीडियोस आते हैं लाइक वीकली मंथली, तो दोज आई यूज टू प्ले इन लूप बिकॉज आई न्यू कि अगर मैं पीडीएफ से पढ़ूंगी तो नहीं हो पाएगा बिकॉज माय रिटेंशन पर लाइक आई कैन थिंक लॉजिकल बट वेयर इट कम्स टू लर्निंग पार्ट देयर आई फाइंड अ बिट डिफिकल्टी। तो मुझे सिर्फ सुनने की आदत है, सुनकर आई कैन रिटेन। तो वीडियोस चलते रहता था, मैं अपने काम करते रहती थी, या कभी डिनर हो रहा है मेरा तो भी वीडियोस चल रही हैं, या कभी ब्रांच में ब्रेक मिल रहा है तो भी आई यूज टू पुट ऑन माय ईयरफोन्स एंड वीडियोस चलते रहते थे ऐसे। सो देयर आई कुड लर्न फ्रॉम देम। So very important thing that I wanted to mention here, like guys, कि a very interesting thing about her, that basically the working experience want like कि हमें थोड़ा सा mind fresh करना है, so they just started watching like so many OTTs. But let me mention here this, that she used to play all these current affairs videos on her TV. Am I right with Sonam? Yes, sir. Like, for me, I just need my laptop and I'm fine. their laptop में बस कुछ भी चल रहा है, खाना चल रहा है या फिर even if I am not feeling good, I feel sleepy. तो सोते सोते भी वीडियोस चल रही है because subconscious mind is always active. तो कुछ ना कुछ आप सुनोगे तो यू कुड रिलेट कि ठीक है, अच्छा ये मैंने सुना था, कहीं तो सुना था, यू नॉट रिमेम्बर कहाँ सुना था, बट यू कुड रिलेट कि ठीक है, एमसीक्यूज में इट हैज हेल्प मी अ लॉट कि ठीक है हाँ ये मैंने सुना था। So basically जो भी हमारी वीकनेसेस हैं उसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है. लाइक शी हैज मेंशन्ड दैट यस it was a weak part, the general awareness, retaining that. So she inculcated that thing into her life, like watching videos throughout the time so that she can retain those particular things. So I think that is the most important learning that you guys also can take away from here and really implement that in your daily life as well. So when we talk about the phase two part, so what exactly was your strategy for the phase two? Like you are basically from computer and IT stream, so आपने उसको कैसे मैनेज किया? So that means was a bit difficult for me because I always strategize and plan, but there I could not find much guidance because for IT specific stream, I could not find the free content which I used to rely on YouTube. So there I could what I could do was download the syllabus from NABARD official site, and after that syllabus, I had a paper and मुझे सिर्फ वो paper complete करना था. I like mentally give confidence to myself. I said कि नहीं सोनम एक paper ही तो है, बस ये topics complete करने हैं. एंड फ्रॉम दोज टॉपिक्स आई फिगर्ड आउट कि ठीक है इंजीनियरिंग में ये टॉपिक्स या सारे टॉपिक्स तो किए हैं. इट वाज जस्ट कि जो सारे एडवांसमेंट्स आए हैं इन टॉपिक्स में या फिर हाउ दीज टॉपिक्स आर रिलेटेड टू एग्री और रूरल डेवलपमेंट, बस उस पर फोकस करना है. तो सारे टॉपिक्स एक बार लिस्ट निकाल के एक एक टॉपिक का यूट्यूब पर सर्च करा. उसके बाद आई कुड फाइंड मेनी वीडियोस लाइक सिंपली लर्न से, एड्यूरेका से एंड आईबीएम टेक्नोलॉजीज से. तो उसमें आई कुड फिगर आउट कि ठीक है ये वाला सोर्स ज्यादा हेल्पफुल हो रहा है या फिर इससे मुझे ज्यादा इजीली समझ आ रहा है. बिकॉज यू कैन नॉट कवर एवरीथिंग. 4 years of engineering you cannot cover in 15 or 20 days. तो उसमें आई हैड टू कंसाइज दैट सोर्स. तो आईबीएम टेक्नोलॉजीज को मैंने बहुत फॉलो करा है. एक टॉपिक आई यूज टू सर्च एंड आई यूज टू वॉच वीडियोज, डिफरेंट डिफरेंट वीडियोज जितना भी अवेलेबल था. एंड आई यूज टू मेक श्योर कि ठीक है ये टॉपिक मैंने एक बार रीड कर लिया है, आई थिंक एवरीथिंग इज कवर्ड फ्रॉम दिस. एक क्रॉस करा वो टॉपिक में. उसके बाद आई यूज टू सिट एंड व्हाट कुड बी द प्रोबेबल डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट टॉपिक. आई यूज टू थिंक माई सेल्फ ओनली कि ठीक है व्हाट इफ आई वाज एट देयर पॉइंट जो रिक्रूट कर रहे हैं, तो क्या क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं इस टॉपिक से. तो वो क्वेश्चंस आई यूज टू फ्रेम एंड
आई यूज टू टाइप कि ठीक है, एटलीस्ट 400 वर्ड्स, 400 to 500 वर्ड्स आई शुड बी एबल टू टाइप फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टॉपिक. So, yeah, for each and every topic, I used to do this, and then I used to strike out that topic completely. कि ठीक है, now it is done because I have practiced it also. So what you have mentioned, I think twice or thrice about striking out these topics that you have covered. What was the importance behind that? Sir, it used to give me confidence कि ठीक है, now I'm reaching towards my goal, towards finishing that one page ki theek hai, now this is done. And that crossing, like from childhood only, that crossing used to make me feel good ki theek hai, now you have actually completed that. Because brain used to verify कि ठीक है, नहीं ये टॉपिक मुझे अगर दिख रहा है तो कुछ ना कुछ इसमें छूटा है, something is remaining there. So when I used to cross it double time, strike it so that topic थोड़ा सा बस दिखे कि so that I could relate कि ठीक है ये topic है, तो that used to give me confidence, encouragement कि ठीक है, now you are doing good सोनम, कि ठीक है आगे बढ़ रहे हो आप. बिकॉज अगर वो टॉपिक, कोई सा भी टॉपिक क्रॉस नहीं होता था, आई यूज टू फील कि आज मैंने कुछ नहीं करा है. तो भले ही लाइक 10 टॉपिक्स हैं, 10 टॉपिक्स में से एक टॉपिक करो आप, बट एवरी डे का एक टॉपिक थोड़ा सा स्ट्राइक होना चाहिए. लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो Mhm. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपने अगर आज कुछ करा है तो थोड़ा सा उस पर क्रॉस लगा दो कि ठीक है यू डिड समथिंग. या फिर कल आपने उसके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस कर लिए हैं, देन यू स्ट्राइक दैट कंप्लीटली कि नाउ इट इज कंप्लीटली फिनिश्ड. सो नाउ यू डोंट नीड टू सी दैट. So basically, it was giving you a sense of achievement, like, yes, today I have achieved something. यस सर. And I think that really plays a very important role in in remaining self motivated to do a lot more things. And that also shows that, yes, your discipline is really on the right track, and yes, you are going in the right direction. राइट सर. So once again, guys, a very important thing that we can learn from here, that basically she once again worked on her weaknesses, like as she mentioned earlier, like she was having a problem in the descriptive writing, and she practiced it again and again, and just turning her weakness into her strength. And once again, typing was also an issue for you, as you mentioned, like typing continuously for like that you basically जो आपने feel किया था during your RBA grade B officer exam. Yes, sir. I had the knowledge. I have studied it, but it was like I had to motivate myself to type. I could speak कि ठीक है, this is the topic I know, ये है, ऐसा है, वैसा है. More than 600 words I could speak, but I couldn't type because typing में भी ऐसे नहीं है. Like my typing speed is also good, but I used to like, I had to gain some encouragement to type in the examination hall. सो आपने पूरी अच्छे से प्लानिंग की, हर एक अपनी वीकनेस पे काम किया. सो बट वी ऑलवेज से दैट आफ्टर द प्लानिंग इट्स द एग्जीक्यूशन दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सो कैन यू जस्ट डिस्क्राइब अबाउट योर मीन्स एग्जाम डे, दैट हाउ एग्जैक्टली दैट डे वाज, हाउ यू एग्जीक्यूटेड द होल प्रिपरेशन, जो जितनी प्लानिंग थी आपकी उसको कैसे एग्जीक्यूट किया आपने? So mains mein it was a bit unexpected because I had to travel at night to reach the examination center. उसके बाद सुबह it was English descriptive, that was fine. उसके बाद there was a break of like a few hours. तो वहाँ पर I don't know what happened, but my health was a bit down, and I started vomiting there, and I don't know, maybe indigestion or something like that, because traveling हुआ and सुबह I couldn't eat anything. सो ब्रेक में आई ट्राइड कि थोड़ा सा रिलैक्स करूं. आई जस्ट सेट अंडर द ट्री एंड हेड डाउन किया मैंने. उसके बाद जब सेकेंड एग्जामिनेशन, एक्चुअल जो एग्जामिनेशन हुआ ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव फॉर द स्पेसिफिक स्ट्रीम, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ मुझे बिकॉज मेरा बहुत ज्यादा टाइम, लाइक 1/3 टाइम वाज वेस्टेड. आई हैड टू गो टू द वॉशरूम सो दैट आई कुड लाइक वोमिट, और लाइक आई वाज फीलिंग रियली अनईजी देयर. तो वहाँ पे मुझे टाइम वेस्ट लगा, बट आई ट्राइड टू कंसोल माई सेल्फ. आई यूज टू गो एंड वॉश माई फेस कि एटलीस्ट आई कुड सी एंड रीड द क्वेश्चंस. ऑब्जेक्टिव में ऐसे हुआ, तो ऑब्जेक्टिव में
by God forbid, the questions were good. Ki single liner or two liner questions were there. They were not much descriptive like grade B, because grade B से I learned कि general awareness के questions बड़े भी होते हैं. You need to analyze, you need to understand, then you need to read the options also, and you need to mark that also. So वहां से I enhanced my reading speed. So yeah, there I could I just had to motivate myself as I learned from grade B कि ठीक है जो भी होगा देखा जाएगा, but I had to show them कि मैंने मेहनत करा है, and I know the answers. I'll have to give the answers. सो वन थर्ड टाइम आपका वेस्ट हुआ इन ड्यू टू योर बैड हेल्थ. Yes. बेसिकली जो गिवन टाइम हमारे पास रहता है, इवन देयर आर स्टूडेंट्स विच फेस लाइक दिस टाइम वाज आल्सो नॉट एनफ टू कंप्लीट द एग्जाम. तो रिमेनिंग टू थर्ड टाइम को आपने किस तरीके से यूटिलाइज किया? लाइक यू रिकलेक्टेड योरसेल्फ ड्यूरिंग दोज बैड मोमेंट्स एंड देन यू वंस अगेन ट्राइड टू गिव योर बेस्ट. सो व्हाट वो स्ट्रेंथ वो कहाँ से आई आपके अंदर? So, firstly, I drank a lot of water. I remembered there, eighth class में I had a mathematics teacher. He said like examination hall में अगर आप पानी पियोगे ना तो आपका दिमाग ज़्यादा चलता है. Like I don't know whether it's true or not, but that helped me. पानी पिया मैंने, खुद को कंसोल करा. उसके बाद like I have very conservative approach. MCQs और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में मैं कभी भी सारे अटेम्प्ट नहीं करती हूँ. आई ओनली अटेम्प्ट इफ आई नो, बिकॉज कोई मतलब नहीं है नेगेटिव मार्किंग अर्न करने का. तो हमेशा वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं जिसका आई एम प्रेटी श्योर कि दिस इज द आंसर. तो अटेम्प्ट्स मेरे काफी कम थे ऑब्जेक्टिव में. एंड डिस्क्रिप्टिव में आई हैड टू चेंज अ बिट, फ्रॉम आई हैड टू डिविएट फ्रॉम माय स्ट्रैटेजी कि सारे क्वेश्चंस करने हैं एंड 500 वर्ड्स सब में होने चाहिए. दैट वाज माय स्ट्रैटेजी. बट देयर आई डिडंट हैव मच टाइम, तो वहां पे आई switched it to 400, like 400 to 450 words I'll type. बट उसमें भी I'll make sure कि सारे टॉपिक्स एक बार देख लूँ, सारे क्वेश्चंस एक बार देखकर आई प्रायोरिटाइज कि ठीक है ये वाले का आई नो कि इसमें आई डोंट नीड टू थिंक मच, आई जस्ट हैव टू टाइप. सो लाइक प्रायोरिटाइज करके आई जस्ट रोट रफ शीट कि ये वाला क्वेश्चन ऐसे करना है, ये पहले करना है. तो उतने में आई कुड रिलेट कि ठीक है बस टाइप करना है मुझे. एंड आई हैड टू मेक श्योर कि फर्स्ट टाइप में ही स्पेलिंग एरर्स और ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होने चाहिए, बिकॉज आई डोंट हैव टाइम कि मैं रिविजिट करूं क्वेश्चंस. इसलिए इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट ओनली आई हैड टू मेक श्योर, एंड प्रैक्टिस मेड मी डू दैट कि प्रैक्टिस किया है मैंने, ग्रामेटिकल एरर्स कम होंगी, स्पेलिंग एरर्स कम होंगी. तो बस मुझे अटेम्प्ट करना है जितना भी टाइम बचा है मेरे पास. Okay. So two things that we can take from here. One thing is that focusing on accuracy is very important. Being accurate, अगर आपने कम attempts किए, then also you there is a very high probability of clearing the exam. And the second important thing is, despite any challenge which comes to your way, and where there is a will, there is a way. So as she was also willing, like yes, she has prepared a lot. She has already made a lot of hard efforts, and with that particular kind of preparation, whatever the challenge came, being present at the very present moment, it is very important. And koi bhi situation aati hai, we can always find a way to basically resolve it. And that's how very beautifully and effortlessly she has done this. Also, sir, I would like to mention there in the break itself, I could find one of my college friends. तो she helped me a lot कि ठीक है पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, एंड आई यूज टू सिट, एंड शी वाज लाइक ठीक है कोल्ड ड्रिंक ला दूं, कुछ खाने के लिए ला दूं. तो शी एटलीस्ट शी वाज देयर, सो आई कुड लाइक रिलेट कि ठीक है नहीं कोई है वहां पे. बिकॉज आई वेंट अलोन फॉर द मेंस फॉर द इंटरव्यू ऑल्सो. सो इफ यू फाइंड समवन रिलेटेबल या फिर जिसको आप जानते हो, तो यू ऑटोमेटिकली गेन सम कॉन्फिडेंस कि ठीक है कुछ होगा तो शी इज देयर. तो या शी वाज आल्सो देयर. Okay, that's really great. So इसी तरीके से हमारी लाइफ में बहुत सपोर्टिंग पिलर्स होते हैं. So throughout your preparation journey, who were your supporting pillars? Like it can be your family or friends. Would you like to mention that? So my parents always encouraged me. Like
ऑल्दो दे डिडंट न्यू कि मैं किसके लिए प्रिपेयर कर रही हूँ या फिर क्यों इतना मेहनत कर रही हूँ, बट दे वर ऑलवेज देयर कि टू सपोर्ट मी कि ठीक है, करना है तुझे कर ले, तुझे जहाँ अच्छा लगता है वो कर, जैसे करना है वैसे कर। बट हेल्थ कॉन्शियस थे थोड़े से कि हेल्थ गिरा के नहीं। तो दे यूज्ड टू मेक श्योर कि अगर मैं घर पर हूँ एंड माय करंट पोस्टिंग इज नियर माय होम टाउन, लाइक 80 किलोmeters फ्रॉम माय नेटिव प्लेस। सो इन वीकेंड्स आई यूज्ड टू गो होम एंड देयर माय मम्मा एंड पापा यूज्ड टू टेक केयर ऑफ मी कि ठीक है, खाने में एटलीस्ट जब घर पर हैं तब तो न्यूट्रिएंट्स, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स ले रही हूँ मैं। तो कभी भी कुछ भी ऐसा इश्यू नहीं आया है, पेरेंट्स ने हमेशा सपोर्ट करा है एंड पीयर ग्रुप आल्सो सपोर्टेड मी। Like I remember in my second branch posting, it was SME posting in Indore. There my RM SME always supported कि नहीं तुम्हारा मेन से like I have grade B का prelims। तो वहाँ पे he was like कि like audit चल रहा था हमारी ब्रांच में, internal audit। ही वॉज लाइक नहीं सोनम, चलते रहेगा, कैसे भी काम काम होते रहेगा, यू जस्ट फोकस ऑन योर एग्जाम। ऐसे ही लाइक CIB भी एग्जाम था मेरा, ही यूज टू लाइक ही यूज टू सपोर्ट मी देयर कि ठीक है, ब्रांच हेड से बोल दिया कि नहीं वो डॉक्यूमेंट्स पे साइन करवाने गई है या फिर इंस्पेक्शंस के लिए गई है, तो वहां से ब्रेक मिल जाता था मुझे पढ़ने के लिए थोड़ा सा। Okay. So apart from this, Sonam, can you also tell us about like how did you prepare for the interview part? We all know that there are so many reports that we have to go through, and we are also required to really work on the website of the NABARD. So आपने उसको कैसे plan किया और strategize किया? So for interview part, some of the topics I studied from like the mains itself, and mains में I made sure कि अगर एक topic में complete कर रही हूँ तो wholesomely complete कर रही हूँ, for even if कोई सा भी question आएगा I should be able to answer that। तो जो भी subjects मैंने, जो भी mains के लिए topics मैंने read करे थे उसको I just like revised a bit and आई मेड श्योर कि ठीक है, जनरलिस्ट स्ट्रीम में भी हैं लोग तो वहां से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, लाइक बिकॉज बेसिकली द ऑर्गेनाइजेशन इज द डेवलपमेंट बैंक। सो एंड दैट टू फॉर रूरल एंड एग्रीकल्चर, तो वहां से ऑब्वियसली क्वेश्चंस आएंगे। सो आई यूज टू मेक श्योर कि नबार्ड ऑफिशियल साइट nabard.org पर जो भी है, like each and everything about us, even about us, all the head offices, all the departments, जो भी है, make sure you know each and everything, like And it is tremendous, the website has lot of content। तो वहां से मैंने स्टार्ट करा एंड इट टुक लाइक 10 to 15 days for the site itself। But yeah, when I studied from there, when I went through the site, I felt confident कि ठीक है, at least now I know about the NABARD completely, I know about the NABARD। Then there was NABARD annual report, that also I downloaded from the official site itself। It had like 252 or 250 pages around, but I knew कि इतने सारे pages I'll not be able to read always, and in the first go I'll not be able to remember the facts and figures। सो उसमें आई मेड श्योर कि ठीक है, आई हाईलाइट द पॉइंट्स इन द फर्स्ट गो, देन उसके बाद नेक्स्ट इट शुड बी इजी गोइंग कि नेक्स्ट रीड में आई बी एबल टू रिलेट कि ठीक है, ये पढ़ा था, ऐसे था। So in the first go, I read each and every line of that NABARD annual report. So I came to know what NABARD actually is and how it is spread across the country। So it gained my interest कि अच्छा हाँ, NABARD ये भी कर रहा है, NABARD यहाँ पर भी प्रेजेंस शो कर रहा है, NABARD इसमें भी है। तो जैसे ही आपका इंटरेस्ट आने लगता है, you start reading that stuff, बिकॉज़ पीडीएफ से पढ़ने का मेरा लाइक ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा है कभी भी। तो जब मैंने स्टार्ट किया रीड करना, उसके बाद आई कुड रिलेट कि हाँ, आई कैन रीड दैट कंप्लीट डॉक्यूमेंट रीड करा मैंने एंड आई ट्रांसफॉर्म दैट 250 पेजेस इनटू 4 टू 5 पेजेस एंड दोज़ 4 टू 5 पेजेस वर सफिशिएंट कि ठीक है, अब मुझे 250 पेजेस को देखने की ज़रूरत नहीं है, ओनली दोज़ 5 पेजेस आर सफिशिएंट फॉर मी। वो 5 पेजेस का प्रिंट आई यूज्ड टू कैरी एवरीवेयर। अगर मैं घर जा रही हूँ, अगर मैं ब्रांच जा रही हूँ या फिर अगर मैं फ्लैट पर ही हूँ, हमेशा मेरे बैग में वो 5 पेजेस रहते थे कि ठीक है, जब टाइम मिलेगा
एक टॉपिक देखा मैंने। अच्छा, तो वो टॉपिक का अंदर ही अंदर आई थिंक कि अच्छा हाँ, इसमें ये था, ऐसे था, इसमें ये फैक्ट्स एंड फिगर्स पूछ सकते हैं। या फिर जो भी चैप्टर्स थे, अराउंड 10 चैप्टर्स हैं आई गेस नबार्ड एनुअल रिपोर्ट में। तो वो सारे चैप्टर्स का मैंने बुलेट पॉइंट्स बनाए थे कि ठीक है, ये चैप्टर के अंदर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो दैट वाज हेल्पफुल। एंड जो नाबार्ड का वेबसाइट है उसमें भी, सिंस आई आई वाज आईटी ग्रेजुएट, कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट, सो लाइक आई चेक्ड कि अच्छा दिस इज द साइट एंड इसमें क्या-क्या इम्प्रूवमेंट्स हो सकते हैं। Like government, most of the government sites like hang when traffic increases in that URL. So like 2-3 points I noted कि ठीक है, अगर even if they ask कि क्या modifications या फिर क्या-क्या improvements ला सकते हैं नबार्ड साइट में, तो there also I'll be able to answer. तो वो सब मैंने नोट करके रखा था। Okay, and how it did help you in the final interview part? It really helped me because NABARD chairperson asked me कि like SBI में you are already there and fintech में you have worked, तो वहाँ से आप अब like JIB हो गया, CIB हो गया, within a year you are very studious and you can grow in SBI also. So why NABARD now? Then I told her that I didn't know about NABARD much before. And when I came to know about NABARD, so like there were 28 departments. So instead of framing that question as why I chose NABARD, why NABARD should select me or choose me, I answered it like that. तो उसमें आई मेंशन्ड कि these all departments are IT specific in NABARD, and there also there was one specific department of data management, data analytics and business intelligence. So I told them specifically कि this department is envisaging to develop such technologies or use or leverage those technologies to bring up some advancements, and I have already worked into that. And there were major projects, minor projects, and I could relate कि ठीक है, ये प्रोजेक्ट पे मैंने ऑलरेडी काम किया है या फिर मेरे करिकुलम में ये सब्जेक्ट्स रहे हैं, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, AI. So I could be an asset for NABARD into envisaging that or achieving that particular goal. So there she got impressed कि ठीक है, at least मैं पढ़कर आई हूँ about NABARD, what NABARD is. And that also shows how badly you also want to join NABARD. Yes, sir, definitely. That's really great. So, if we just in a nutshell, if we can say that those planning part has really played a very important role in your whole preparation journey. Apart from that, one more thing that I have heard a lot, that is the YouTube. That Yes. YouTube has also played a very important part. Can you throw some light on that? So YouTube, like without YouTube, I would have not been able to clear the examination because I am not habitual of reading from PDFs. I've always read from the books. So hard copy I used to like hard copies were always ओके फॉर मी। बट यहाँ पर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में ट्रेंड कीप्स चेंजिंग, तो आप किसी पर्टिकुलर बुक या फिर किसी पर्टिकुलर सोर्स पे रिलाय नहीं कर सकते हो। तो लाइक फॉर मी बाइंग अ कोर्स एंड डेडिकेटेडली फॉलोइंग दैट वाज नॉट like it was not at all my cup of cake because I had to go to branch, then some plans used to change because टाइम ही नहीं होता था उतना कि कोर्स कंप्लीट करें या कुछ करें। तो अगर कोर्स ले लेती मैं तो दैट वुड हैव लाइक डिस्करेज्ड मी बिकॉज़ आई आई प्रेफर ग्रोइंग, एंड जब तक मेरा कुछ सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है तब तक आई डोंट गेन एनी कॉन्फिडेंस। तो अगर कोर्स नहीं हो पाता तो कॉन्फिडेंस लूज़ करने लगती मैं, डिमोटिवेट होने लगती, इसलिए आई नेवर रिलाइड ऑन एनी कोर्स। यूट्यूब पर इट वाज सो ईज़ी गोइंग कि मुझे सिर्फ एक सिलेबस निकालना था, 1 पेज सिलेबस दैट टू, एंड सिलेबस से सिर्फ टॉपिक उठा के यूट्यूब पे सर्च करना था एंड दैट वाज सफिशिएंट। मुझे सिर्फ सोर्स निकालना है, रिसोर्सेज प्रॉपर यूटिलाइज़ करनी है, यूट्यूब पर सब अवेलेबल है, एक्चुअल में सब अवेलेबल है सर। बस आपको
खुद को मोटिवेट रखना है कि हाँ, ये टॉपिक है, ये टॉपिक मुझे समझ नहीं आ रहा है, इट्स ओके। सेकेंड टाइम आपने देखा या किसी और चैनल से देखा, तब भी समझ नहीं आ रहा है, इट्स फाइन। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, यू कैन एक्सपर्टीज इनटू दोस टॉपिक्स। या फिर उस टॉपिक का 5-6 वीडियोस देखो जहां से आपको समझ आ रहा है, एटलीस्ट यू विल गेन समथिंग, एंड दैट इज सफिशिएंट। तो So यस सर, इट हैज रियली हेल्प मी। so we always say about the efficient use of resources, and I think this is the perfect example of that. यस सर। So apart from this, we have already discussed all the most important points. So are you now having another important target right now? Like what next after SBI, then NABARD? So it is like I always liked computers. Like 11th, 12th, maybe I had CS as my optional. From there, I gained interest. So now I am into a government organization, and I would be working into my expertise like IT. So for now, it is like कि ठीक है, what I wanted is there. So for now, it's not there. I'm not planning to move from NABARD, but yeah, definitely I prefer upgrading my skills. So for that, I'll keep working. That's really great. So, Ms. Sonam, what exactly is the most important thing about your preparation, the journey, or the learning that you want the other aspirants to also follow? So it would be like never giving up, and always trying. Like ठीक है, sometimes we get demotivated कि कुछ भी as per our plans नहीं जा रहा है, तो उस टाइम पे जस्ट लीव एवरीथिंग। व्हाट आई यूज्ड टू डू, ठीक है अब कुछ भी सही नहीं हो रहा है, forget everything, freshen up your mind, like वीसी करो फ्रेंड्स के साथ, या फिर फ्रेंड्स के साथ घूमने जाओ कहीं पे, या फिर फैमिली के साथ डिनर, प्रॉपर डिनर, या फिर कुछ नहीं तो बस अ साउंड स्लीप। लाइक अ साउंड स्लीप एंड पावर नैप्स हैज ऑलवेज हेल्प्ड मी कि जब कुछ समझ नहीं आ रहा है ना आपको, जस्ट रिलैक्स, काम डाउन, एंड देन रीस्टार्ट। बिकॉज़ कभी ऐसे होता है कि लाइक सिस्टम में कुछ भी काम नहीं कर रहा है, व्हाट यू डू, यू जस्ट स्विच ऑफ दैट सिस्टम कि ठीक है रीस्टार्ट कर दो, कुछ ना कुछ सही हो जाएगा। तो सिस्टम रीस्टार्ट होता है, वैसे ही वी आल्सो रीस्टार्ट। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको कहाँ से एनर्जी, कहाँ से मोटिवेशन मिलता है टू वर्क ऑन योर ड्रीम्स। A very important point. So that was really great, Miss Sonam, to have you on board and for such a beautiful journey that you have already told to all the aspirants. And definitely, guys, you are having a lot of points to learn from her, and you can implement them, employ them in your preparation journey to become the NABARD Grade A officer. So once again, ma'am, thank you, and we congratulate you and wish you all the best for your upcoming future. And guys, we will keep on coming up with such kind of more interesting sessions for all of you so that you can gain the most from the toppers and you can become the NABARD Grade A officer the next year. Thank you. थैंक यू सर।